In contemporary times, Indian subcontinent has been a victim of a number of natural calamities, from cloudbursts in Uttarakhand to cyclones like Amphan and Taukte. ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से इंडिया हमेशा से ही साइक्लोन्स और फ्लड्स के घेरे में रहा है, पर इनकी इंटेंसिटी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है. वन ऑफ द मेन रीजंस फ्यूलिंग दीज डिजास्टर्स इज क्लाइमेट चेंज. इसे अच्छे से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ रीजन्स वेदर इवेंट्स. हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट डायनेमिक स्टेट में रहता है. In billions of years of its existence, it has been changed many times in response to natural causes, जैसे कि glaciation या उनका melt होना, volcanic activities, etc. These changes are natural and they occur from time to time. पर आज जब हम climate change की बात करते हैं, we refer to the changes in many atmosphere in the past 100 years of caused predominantly due to human activities. क्लाइमेट चेंज हमारे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को ऑल्टर करता है, मेकिंग इट प्रोग्रेसिवली वार्मर. दिस वार्मिंग एट अ ग्लोबल लेवल इज एट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड विच ट्रैप द सन्स हीट एंड क्रिएट अ ब्लैंकेट अराउंड द प्लैनेट. एक बार जब ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में एमिट हो जाती है, फिर वो काफी सालों तक वहां रहकर एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करती है. These greenhouse gases are released by us burning fossil fuels, which are coal and petroleum and large-scale deforestation. इन दोनों ही एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. टुडे वी ऑल आर सराउंडेड बाय फॉसिल फ्यूल कंजप्शन. हमारा हर काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉसिल फ्यूल के जलाने से चलता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट भी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से अब तक हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल लगभग 50% से ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी 1.2 डिग्रीज तक की राइज हो चुका है. देखने में ये फिगर भले ही छोटा लगता हो, बट दिस अमाउंट ऑफ वार्मिंग हैज बीन इनफ टू कॉज कैटास्ट्रोफिक and some irreversible changes to our planetary system. We have already seen 3 of the hottest summers ever recorded in the last 5 years and an upsurge to extreme weather events. Now you must be wondering about the impacts. Climate change के impacts हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, sea level rise से लेकर के heat waves और wildfires तक की. Global temperature rise has set off a domino effect in terms of weather events. एक disaster कोई और disaster की वजह से बन जाता है. Rising global temperature has been a cause of large-scale glacier melting, which is causing sea level to rise. Further, it's causing a shift in rainfall pattern, making them more unpredictable, causing droughts in some places and floods in others. Over the years, instances of wildfires have become more deadly, जैसे कि Australian bushfire या Californian wildfire. We are losing more and more land to deforestation. हमारे ओशियंस को, जो कार्बन स्टोर करने में हमारे सबसे बड़े हेल्पर्स हैं, खुद गर्म होकर के साथ ही साथ अपने अंदर की बायोडाइवर्सिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं. We are driving so many plants and animals' life to extinction due to drastic change in our habitat. Ecosystems are quite complex and fragile, interfering them with them proving to be dangerous and deadly. The biggest instance of how interfering with planetary boundaries can affect our lives in COVID-19 itself. Deforestation and such activities which hamper nature make it weak and its constituent organism vulnerable to diseases and other threats. हम देख ही चुके हैं कि कैसे एक महामारी ने दुनिया को उथल-पुथल कर दिया. Climate change is not just an environmental issue, but one that has its reaches within the depth of society. Everyone is not equally affected by it. The poor will always remain more vulnerable, especially the ones living in a developing country, since developing nations geographically are more prone to extreme events caused by climate change. साथ ही कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग अपने पूरे शहर खो सकते हैं. सी लेवल की तेजी से राइज होने की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास उन इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स की भी कमी है. And it also promotes natural disasters. India is one such country that has been at the receiving end of multiple natural calamities. Over the past few years,
क्योंकि इंडिया तीनों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, साइक्लोन एक्टिविटीज रिलेटिवली फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस होती है. सो व्हाई इज देयर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग डिजास्टर्स? इंडिया अपने ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और अपने वेस्ट में अरेबियन सी से. अरेबियन सी इज कंबाइंड टू द कामो वन कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल. पर अब सी की टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये इक्वेशन शिफ्ट हो रही है. Now, the Arabian Sea is progressively getting warmer as it is absorbing more carbon from the atmosphere. These warming seas are perfect recipe for a disaster. साइंटिस्ट का कहना है कि इस वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही गई है, साथ ही साथ उनकी इंटेंसिटी भी काफी गुना बढ़ चुकी है. This means that the cyclones that we experience now have the ability to cause vast expense of destruction of life. Out of 5 cyclones last year originated in the Arabian Sea, both of which were severe. Cyclone Taukte, which made landfall on the western coast earlier this year, originated in the Arabian Sea, which had its surface temperature over 30 degrees, an unusually high temperature. It was the 5th strongest storm to hit Arabian Sea since 1998. इस साइक्लोन ने 90 से ज्यादा जानें ली, काफी मिसिंग रिपोर्टेड करे गए और हजारों के घर और मकानों का नुकसान. टाक्टे ने चल रहे पेंडेमिक से हो रहे नुकसान को भी इंटेंसिफाई किया. दिस इज द इफेक्ट ऑफ जस्ट वन साइक्लोन. इन द पास्ट 3 years, cyclones in the Arabian Sea has resulted in a loss of over 200 lives and an approximate economic loss of $3 billion USD. Our coastal infrastructure is far from ready in facing such frequent storms. These events uproot the homes of many and push them into extreme poverty. Biodiversity in Western Ghats and coral reefs near Lakshadweep also are in danger from strong winds and flash floods that accompany these cyclones, which are only going to become more frequent. That's not all. Senior officer with Food and Agriculture Organization Keith Cressman has said that the changing wind pattern over the Indian-Pakistan region and frequent cyclones in the Indian Ocean are creating suitable breeding grounds for locusts. This is why northern India and some its neighbors witnessed a very rare locust plague in 2020. These gracious creatures are a huge threat to our food security. छोटे से insects अपने खुद के weight जितना खाना खा सकते हैं each day. Just imagine the level of crop destruction a swarm of locusts are capable of. It doesn't help the fact that monsoon season, thanks to climate change, has become increasingly unpredictable. हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से अब मॉनसून की इंटेंसिटी भी देश में बढ़ती नजर आ रही है. हैवी मॉनसून मीन्स फ्लडिंग, विच इज अनदर वर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन. अ हैवी ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट. Our farmers remain at the mercy of monsoon season. So the erratic monsoon combined with degradation soil condition very much threatens their capacity of food production. Research also suggests that Indian witnessing an unusual monsoon accompanied with warming seas can be a cause for frequent cloudbursts. You must have noticed the number of cloudburst incidents being reported every year have been on a rise. उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ वो और साल में और अर्ली हो रहे हैं. The Himalayan region is heating up at a higher rate compared to other regions, and higher temperature equals to more moisture. इसकी वजह से वहां हैवी मॉनसून और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है. क्लाइमेट चेंज में नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कॉजिंग क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स, बट इट डेफिनेटली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग देयर इम्पैक्ट्स. पर ये रही बातें जो कि डैमेज हम कर चुके हैं. नाउ वी कैन स्टिल सेव आवर मदर अर्थ. लेट्स सी द सॉल्यूशंस, हाउ वी कैन लोअर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. Fortunately, we as a nation can do a lot to limit the effects of these extreme weather events. Starting with protecting our existing forests, mangrove forests and बाकी green covers. Disaster के against natural और सबसे best protector हैं. They help in substantially reducing the intensity of wind and water force, which can significantly reduce the damage caused. Along with that, they also excellent food control mechanism and help make a city green and sustainable. हमें अपनी cities को और efficient बनाने की जरूरत है so that they are more climate resilient. ये ड्रेनेज और सीवेज को इम्प्रूव करके किया जा सकता है. साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हमारे डेवलपमेंट नीड्स
इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए पूरे किए जाएं। If all this is accompanied by a reliable early warning system and proper disaster management, India will stand a better chance against natural disasters. जब बात रही इंडिविजुअल इफेक्ट की, तो हम भी मिलकर काफी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। Starting with the choices we make in our everyday lives, choosing to walk our destination over driving a vehicle, choosing public transport for longer distances, choosing more energy efficient devices over others, refusing to accept plastic, planting a tree, educating people around you, are changing environment and our role in healing it. आप सबके यही छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर सुधार ला सकते हैं. It's all about making the right choice. धन्यवाद.